just come back watching a movie मैं वापस आऊँगा and it got back a lot of memories inside me. I'm going to share you many stories, but first you watch my entire vlog. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये है फ्राइडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। सो फ्राइडे दे वांट समथिंग स्पेशल, तो आज बन रहे हैं छोले भटूरे और मशरूम सैंडविच फॉर देयर टिफ़िन बॉक्स। छोले भटूरे खाने का प्लान मेरे छोटे वाले बेटे का ही है। वो हमारे घर में एक बॉस बेबी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टिफ़िन बनता है। माई एल्डर सन इज़ वेरी कोऑपरेटिव। उसको मैं कुछ भी टिफ़िन में दूँ तो उसको अच्छा लगता है। ही हैज़ नो फस, बट द यंगर वन इज़ अ रियल बॉस बेबी। तो छोले भटूरे बन रहे हैं एंड देन आई एम गोइंग टू पैक द टिफ़िन। फ्राइडे आते ही मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सैटरडे आने वाला है और सैटरडे मॉर्निंग आई गेट अप लिटिल लेट, बहुत लेट तो नहीं, जहाँ पे मैं 5:30 5:45 उठती हूँ। सैटरडे को अराउंड 7:30 7:45 तक आराम से उठती हूँ और लेजरली बैठ के चाय पीती हूँ। आई इवन डोंट गो फॉर वर्कआउट। तो ये फ्राइडे शाम को इतना अच्छा मौसम, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हम दोस्त शाम को वॉक कर रहे थे। अचानक से प्लान बना, हमारे अपार्टमेंट के बाहर ऑपोजिट रोड में बहुत हैपनिंग शॉप्स आए हैं, तो हमने सोचा चलो जाके चाय पीते हैं और गरम गरम मैगी खाते हैं। इतना मज़ा आया, इतने मज़े का बना था मैगी। वी रियली हैड फन। दिस इज़ सैटरडे मॉर्निंग। मैं उठ के अपना बेड ठीक की और फिर गई चाय बनाने। चाय सैटरडे की हम साथ में लेते हैं और काफ़ी टाइम तक आराम से बैठ के चाय पीते हैं। There is no sense of hurry, nothing. Just chill out and drink tea. ब्रेकफास्ट पे आज बनेगा हॉट डॉग्स, वो भी हमारे बॉस बेबी के कहने पर। ही इज़ एक्साइटेड अबाउट द हॉट डॉग्स। फिर आफ्टर लंच शाम को हम मूवी देखने जाएंगे। Two mangoes, two hot dogs, two. Nemo? How is it? Good. I love chocolates और आजकल मुझे ब्राउनी की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है and I eat, but I thought let me try an alternate recipe. मैंने इंस्टाग्राम में एक चॉकलेट मूस की रेसिपी देखी which is made from paneer. So let me try that recipe and see how it works. If it is good, then there is no turning around. I'm going to make it frequently because I love chocolates. मैं बनाती हूँ, आप सबको रिव्यू शेयर करूँगी. So you please see the recipe. मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है। इसको एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाला। अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ हनी एंड 1 टेबलस्पून ऑफ वैनिला एसेंस इसमें डाला है और अच्छे से भरकर 2 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाला है। हर्शेस का कोको पाउडर आई लाइक, यू कैन ऑल्सो ट्राई। स्वीटनेस के लिए हनी, 1 टेबलस्पून हनी और 3 डेट्स डाला है मैंने। थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है। फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, एक जार में रखेंगे। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रैनबेरी और रेजिन्स से टॉपिंग किया था अलॉन्ग विथ सम सीड। आई मिस टू गिव वॉलनट। आप इसमें वॉलनट ज़रूर डालना, बहुत अच्छा लगेगा। एकदम चॉकलेट मूस ब्राउनी जैसी फीलिंग आएगी। इसको रखने के बाद इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगा के मैंने फ्रिज पे इजीली 3 आवर्स के लिए रखा था। सो दिस इज़ द लंच। Nemo? So this is my lunch, but I'm really looking forward and very excited for the chocolate mousse. तो मैं जल्दी फिनिश करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ how is it.
This looks really delicious. If you want to eat such kind of chocolate mousse at least once in a week or twice in a week, you can try this. It's just really, really delicious. And with 100 grams of paneer, it's a decent quantity. At least 2 person can easily share this. Yum. हाँ, किससे भाग रहे तुम? सुबह ही आजादी आएगी, फिर न कोई बंदिश होगी यार। मैं वापस आऊंगा had 2 aspects in the movie. One was the romantic, the love angle, and another the impact of partition, the psychological impact it brought in people. So I'm going to talk about the later part, the psychological impact. I'm going to talk about 2 people in my life who was affected with partition. One was my Nanaji, my Dadu, and second, my father-in-law, who is also no more. So Dadu and us, like me, had a huge age difference, so ज़्यादा कुछ पता नहीं था. बस दादू used to always talk about so partition में वो ढाका से इंडिया आए, and from Dhaka he got back only 2 things. One was his medical degree and another 2 लौकी, मतलब 2 लौकी अपने गार्डन से लेके वो इंडिया में आए थे. इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था. He practiced whole life his medical thing till his death. I have seen patient coming to his home, like he used to treat them. Maybe it's a kind of an establishment he always wanted to create. उनको लगता था कि मैं हमेशा काम करता रहूं. Maybe that kind of psychological impact, and always he used to show his Tamra Patra to us, like the freedom. He was one of the prominent freedom fighter, and whoever, all his grandchildren know about his Tamra Patra, he was very proud of it. So I have that memory. And the second memory is of my father-in-law. His family had come from Borishal, Bangladesh to India. And how I have seen my father-in-law, like my father, who has been brought up in West Bengal, like Bardhaman, and my father-in-law brought up in Bangladesh, Borishal. So both of them were of like different personality. My father is a happy-go-lucky person. He has been brought up in an affluent family, never worried about food, clothing, shelter. And that kind of like energy he has given it to me and my sister. Like those who know me, they know how happy-go-lucky person I am. So that is my father. Wherein my father-in-law, he has unfortunately he is no more, but all his life he always tried to establish himself. Like after his marriage, he earned his PhD degree. He was a very prominent professor in IIT Madras, but he was never content. The feeling of content was not there. It was always like, what else, what more, and always in a panic situation. Ki how can you are so cool? If your plan doesn't work, then what will you do? That was his personality, and he himself was like that. He always had plan A. If that doesn't work, plan B. If that doesn't work, plan C. So
imagine what kind of impact, psychological impact, a partition got into one entire generation of people. And also for my father-in-law, I have seen, which my mother-in-law still maintains, like keeping abundance at home. We all do. We all keep things extra in the house. But he was like keeping 6 month or 1 year worth of ration in the house all the time. He was always in such situation, like there should not be less food, there should not be less of material in the house. And I used to ask him, why Baba, why you do this, why you hoard thing up when there are a lot of shops nearby. He used to tell me a story, Kirini, you don't know, whenever I see less food, less rice, if I see in the house, I remember my brother. That time when they had come from Bangladesh, they had scarcity of food, and they used to eat maybe one meal in a day. And his brother had become so thin that he used to resemble a crow. That's what he told me in Bengali. कि আমার ভাইকে কাকের মতন লাগতো দেখতে. And whenever there are less food, it reminds me of his brother. Like it is to remind him of his brother. So he cannot tolerate scarcity or less things in the house, which my mother-in-law still maintains, a lot of abundance in the house. So that's the psychology behind it. I never used to understand then, but now I think I understand what was in his mind all the time.